अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, व्यूवर्स, सब्सक्राइबर्स, मेरी सब वीडियो फैमिली, आप सबको एक बार फिर से बहुत ज़्यादा वेलकम बैक मेरी कोई वीडियो में। इन टुडेज वीडियो we're having another perfume with us और I'm gonna unbox it and give you guys review on it. मैंने काफ़ी टाइम से नहीं बनाया कोई भी रिव्यू ऑन परफ्यूम बिकॉज मैंने कोई लिया ही नहीं था एंड आई हैड बीन वेटिंग फॉर समथिंग लाइक दिस। सो आज का जो हमारा परफ्यूम है इट्स फ्रॉम पेनहालिगन्स अगेन। Penhaligons is my most favorite brand and it's very niche. It's from France and आपको हर जगह से नहीं मिलता और Penhaligons की this collection is based on animals. It's portrait collection और जो perfume है मेरे हाथ में it's Lord George और मुझे ये काफ़ी टाइम से चाहिए था। It's the most expensive perfume that I have so far. मेरे पास अब तक जितने भी perfumes हैं उन सब में से this one is the most expensive one and this one has the most worth of all of them. तो इसको अभी हम लोग बॉक्स से बाहर निकालेंगे और मैं आपको दिखाऊंगा, बताऊंगा the reason why I had been looking for this one. And this collection of Penhaligons have different characters and there is a theme behind each one of them. This one is Lord George and there's a story about Lord George which is written behind the box. But the tragedy of Lord George, faithful to king and country, the flesh is weak. I'm not gonna read and go through this all. I will put the video of it so that you guys can read it yourself if you want to have a look. तो अभी हम लोग इसको फटाफट बॉक्स से बाहर निकालते हैं so that without wasting any further time. And yeah, one more thing, Penhaligons, their box, इनकी एक बात अच्छी है कि इनके जो boxes हैं वो बहुत ही ज़्यादा अच्छे होते हैं तो you always get to display them. So here is our perfume out of the wrap and हम लोग इसको बॉक्स से बाहर निकालते हैं. You can see the Lord George and the deer here, so it's a hint. So this is the bottle of the perfume and he's the Lord George. And by the way, the first thing that has catched my attention is the green color because मुझे green color बहुत ज़्यादा पसंद है. This shade of green is my most favorite. So coming on to the perfume, here is our Lord George from Penhaligon. अब हम लोग इसकी जो खुशबू है वो चेक करते हैं, देखते हैं कि ये actually कैसा है. So the fragrance is not fruity, मतलब मेरी favorite choice की तो नहीं है, but still it's very much like lubricants, जिस तरह से Vaseline होती है या soaps होते हैं, मुझे इसकी खुशबू वैसी लग रही है. And after a while I'm getting to notice कि ये change होती जा रही है into नींबू जैसी, lemonade, a little bit basil leaves, थोड़ा बहुत coffee beans, मटरों जैसी भी peas. तो बहुत ही ज़्यादा amalgamation है यहाँ पे, cluster of fragrances है. लेकिन I think because this perfume की projection बहुत strong है, it's oil based, it's free of allergy, it's free of like it's unisex and it's free of age. तो कोई भी इंसान इसको लगा सकता है and it's ideal for winters और it's best कि आप इसको किसी occasion में लगा के जाएं. ये regular use ना करें daily basis पे because I think that's wasting it. आप इसको किसी ओकेजन में जा रहे हैं, किसी फीस्ट पे जा रहे हैं, किसी वेडिंग में जा रहे हैं, किसी स्पेशल गैदरिंग में जा रहे हैं तो वहाँ पे इसको आप लगा सकते हैं एंड वहाँ पे इट विल डेफिनेटली मेक यू स्टैंड अपार्ट एंड इट्स समथिंग दैट्स डिफरेंट जो हमें नॉर्मली जो छोटे मोटे अदर परफ्यूम्स होते हैं उनमें रेगुलरली इस किस्म की फ्रेगरेंसेस हमें नहीं मिलती बिकॉज इट्स डिजाइन बाय. नाउ as far as the price is concerned, you guys have to DM me for that या आप Google में भी definitely देख सकते हैं तो you'll get to see that. Or I will not suggest you to buy it online. It's rather better to go into their outlets और वहाँ से आप इस perfume को लें. Out of 10, I'll definitely give it 10 out of 10. और गिफ्टिंग के लिए ये परफ्यूम बहुत अच्छा है अगर आप कुछ ऐसा देख रहे हैं जो डिफरेंट हो, जो किसी ने इससे पहले ना यूज़ किया हो. तो not only this one but all of Penhaligons की जितनी भी portrait collection के perfumes हैं, all of them are ideal for it and Lord George is one of them. ये displaying के लिए भी अच्छा है and that was the reason why I bought it. And so friends, that's all for my today's video. मुझे उम्मीद है कि आज का वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा. If you guys have enjoyed, do not forget to subscribe my channel, hit the bell icon and comments में अपनी राय देना मत भूलिएगा. This video is not paid promotion. ये मैंने like it's definitely a brand promotion लेकिन मैंने इसको खुद purchase किया and मैं खुद बताना चाहता हूँ how my experience with it is. And so friends, मेरी अगली वीडियो का notification आने तक आप सबको मेरी तरफ से and of course मेरे इस
एंटीलोप डियर की तरफ से बहुत ही ज़्यादा है। अल्लाह हाफ़िज़।